All right, so here we go. Yes, autopilot we were continuing, and there is still a bit of it left. So आज की क्लास लग जाएगी. अगली दो क्लास में we will try to do like this, और जो भी टाइम हो सकेगा. So basic theory of autopilot we have understood. We understood that the autopilot is the brains behind steering. The steering gear does the rudder this way, that way. But how much, what to do, whether to do or not to do is the thinking mind, which we as a person who is steering the vessel, we decide, or in autopilot mode, the autopilot decides. When we are steering, we take inputs and do calculations here, what to do. When autopilot is in action, he decides, the autopilot decides what to do. And then it gives command to the steering gear, and the rudder will be operated in the same. We have seen the block diagram. Now, talking about the brains behind the steering, the autopilot, as we said, there are phases or multiple parts of the brain which is working basically. Brain in the sense the function. The first function is proportional control, where the rudder is applied in proportion to the difference between course to steer and the present course. Is it clear? जितना ज्यादा difference उतना ज्यादा rudder. Of course, proportion में. अगर 40 डिग्री है, 50 डिग्री का ऑल्ट्रेशन तो डिफरेंस है, तो 40 डिग्री तो नहीं जाएगा रडर, बट हार्ड व्हाटएवर हार्ड पोर्ट स्टारबोर्ड जो करना है, that will be happening. Then second part, when it is starting to swing, the derivative controls take over. Then at a point before the ship has come to the set course, अभी आ ही रही थी, यहीं पे मिड शिप कर देता है. Because of the angular momentum of the vessel, she will continue to swing, and then she will try to steady herself on the set course. If required, counter rudder may also be applied. So these are proportional and derivative control. The third control is integral control. Now, what happens in integral control is that the ship generally, sometimes, not generally, sometimes is going off course all the time because of wind, current, etc. The vessel is being steered on this course, but wind is there, so always it is going to this side. उसको लेके वापस आते हैं, फिर सीधा जाते हैं, फिर लेके आते हैं, फिर जाते हैं. So when this is happening, what we do? We apply a permanent rudder opposite. कि जो इधर का इफेक्ट है वो परमानेंट रडर से काउंटर एक्ट होता है. मान लीजिए हर 5 मिनट में देख रहे हैं कि 2 डिग्री ऑफ चला गया, पोर्ट को चला गया, तो हम स्टारबोर्ड को रडर 2-3 डिग्री देके छोड़ देंगे. जो इधर का इफेक्ट है दैट इज नलिफाइड बाय ऑपोजिट रडर. सो इंटीग्रल कंट्रोल इज ऑब्जर्विंग दिस. Because of the nature of the ship, the build, the type of propeller which is used. Have you heard something called transverse thrust? Yes, sir. Okay. So when the blade is operating, the propeller blade is operating, it is cutting the water like this. So the water is cut. But when the force is applied on the water by the blade, there is a sideways component also, not only forward component but sideways component also. So basically the propeller is pushing like this, so stern goes the opposite direction. So for example, right-handed screw, right-handed propeller, there will be tendency of the vessel to go to the port all the time. If it is left-handed, then starboard side. So एक ship का construction हो सकता है, type of rudder being used उससे हो सकता है, weather conditions के चलते भी हो सकता है. So the integral control decides how much of permanent helm to be given and on which side.
to counter the constant effect of the vessel going one way or the other. Now, when the counter rudder is given, the permanent rudder is given, that becomes kind of midship. यहीं से अब ऑपरेट होता है. मान लीजिए 3 डिग्री स्टारबोर्ड दे दिया रडर टू काउंटर द इफेक्ट. अब 3 डिग्री रडर 3 डिग्री स्टारबोर्ड इज बिकमिंग मिडशिप. 5 डिग्री स्टारबोर्ड जाना होगा तो 5 + 3 8 जाएगा. अगर 5 डिग्री स्पोर्ट जाना होगा तो 5 - 3, क्योंकि 3 पे ऑलरेडी था. 3 जाते जाते 3 निकल गया और 2 और, तो पोर्ट 2 डिग्रीज विल एक्चुअली बी पोर्ट 5. तो जहां पे काउंटर रडर है, परमानेंट रडर है, दैट बिकम्स द मिडशिप. नॉट दैट वहां पे मिडशिप हो जाएगा, दैट विल शो कंटिन्यूअसली 3 डिग्रीज ओनली, बट दैट 3 डिग्रीज स्टारबोर्ड इज बिकमिंग द जीरो पोजीशन. सारे कैलकुलेशंस वहीं से होंगे. सो दैट इज इंटीग्रल कंट्रोल. The autopilot system, where we have proportional control, we have derivative control and integral control. What do we call it? Which type of autopilot we call it? Sir, PID. Very good. PID autopilot system. So this is the function block diagram आपने बनाया था. You had made the block diagram. Whenever you are asked to do how the autopilot functions, you have to give the controls and the block diagram. Now, this is a perennial problem with every student, every second mate class, which I am going to discuss. We said control system or control unit, the brains. जिसमें PID हमने देख लिया. But PID के साथ there are user controls provided in the autopilot. Autopilot को सही काम करने के लिए, optimum level पे काम करने के लिए, there are certain inputs that must be set by the user. Apurva, for example, if I tell you, okay, hard starboard, how much do you give? So starboard 35. Okay, starboard 35. Gautam, Asad, how much do you give? Talk from your experience in the ship. First starboard 30. Starboard 30, sir. 30. So, did we see the difference? एक अपूर्वा को सेटिंग करी हुई है 35 इज द मैक्सिमम. आपको सेटिंग करी हुई है, आपके ऑटो पायलट को करी हुई सेटिंग 30. Did we see the difference between the two here? Yes, sir. That means ऑटो पायलट को भी हम बता सकते हैं कि भाई तुम्हारा हार्ड स्टारबोर्ड हार्ड पोर्ट इतना है, 15 डिग्री उसको बता दिया. We can do the setting in rudder limit. There is a rudder limit knob. We can set it to 15 degrees and the ship, the rudder will never go beyond 15 degrees. जैसा अपूर्वा का सेट है 35 पे, आपका सेट है 30 पे, किसी का होगा 25 पे. वैसे ही ऑटो पायलट को आप सेट कर सकते हैं. उसमें एक बटन दिया हुआ है, नॉब दी हुई है, called rudder limit. That means when the autopilot is operated and when the rudder has to go hard, then it will not go beyond that. आपने सेट कर रखा है, आपने 20 कर दिया तो 20 तक जाएगा हार्ड, 25 कर दिया तो 25 तक जाएगा. But we don't give so much of value, we don't set so much value, क्योंकि फिर कंट्रोल मुश्किल हो जाएगा. तो 15 डिग्री के आसपास तक का हम लिमिट रखते हैं. Similarly, there are other user controls that can be set by the user. The autopilot will take those inputs and make this decision. जहाज में आप लोग उस्ताद हैं, लेकिन कप्तान ने जो कह दिया, जो लिमिट्स दे दिए, उसी में काम करते हैं.
आपको सोना भी है, आपको जागना भी है, काम भी करना है, लेकिन वैसे जैसे चीफ ऑफिसर या आप बोलेंगे, ऑटो पायलट को आप बताएंगे कि भाई ये काम आपको करना है और इतने लिमिट्स में करना है. So we have seen one of the limits, one of the settings called rudder limit. Similarly, we have counter rudder. Autopilot has to give counter rudder to stabilize the ship. अब काउंटर रडर में कितना काउंटर रडर मैक्सिमम जा सकता है? 5 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, 15 डिग्री, या काउंटर करने में हार्ड चले जाएंगे. So there is also a setting for counter rudder. You can set the limit 7 degrees, 10 degrees. When you are giving counter, don't go beyond 10 degrees. Who is setting it? You are setting. So PID system तो ठीक है, but you have provided rudder limit, you have provided counter rudder. Integral control में हमने देखा कि there is permanent rudder being applied. There is also provision for you permanent rudder. You can set the permanent rudder 2 degrees, 3 degrees, 4 degrees, starboard port, whatever you want. You can set that. So like this, there are 10, 11 controls provided on the autopilot system, the console, which is to be set by the user in order to make the autopilot work at the optimum. So I will be going to the slides. We'll be talking about all the controls. We have rudder control, we have rudder limit, we have counter rudder, we have permanent rudder, we have course setting control कि कहाँ पे जाना है 250 225 जो हम बात कर रहे थे, course setting control. We have got dimmer, we have got synchronization control, etc, etc. There are 10, 11 of them. So we'll be doing that. But before that, remember again that control unit control system is the PID system. Controls on the panel are the user controls. ये इसके ब्रेन के भीतर का फंक्शन ही हो गया, बट सेटिंग्स आप प्रोवाइड करते हैं तो दोनों के साथ वर्ड कंट्रोल आता है. कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल्स ऑन द पैनल. Provided the question says, okay, I want you all to open the notes. The question answer notes, autopilot, open please. Everyone, very seriously. हर आप लोग खूब लिखते हैं लेकिन गलत लिख जाते हैं. पूछा ये लिख जाते हैं, ये 0 नंबर मिलता है. मेहनत किया उतना, समझ के नहीं कि क्या लिखना है. So I want you to identify the two different questions on your notes. Please open the notes. When done, please tell me. मिल गया? प्रभजोत, यस सर, ओपनिंग सर, खोल रहा हूँ सर. ओके ओके, ढूंढो.
Found it? बोलो तुम लोग, बता दे क्यों मिल रहा है, लग रहा है. Yes, sir. Okay, what is the first question? Please read. Sir, describe the working of the autopilot and its various control units. Understood? What is the question it is asking? क्या चीज लिखना है इसमें? क्या लिखना है आंसर में? बिना आंसर की तरफ देखे हुए बताओ. What is the Sir, question? very different component, proportional, interior and derivative controls. Yes, PID system के बारे में बात करना. What is the second question? Describe the controls on the autopilot panel which may be adjusted for optimum its performance. Yes. So, did you identify the difference between the two questions? Control units, controls on the panel. All right. Yes, sir. So, that is what I'm saying. Please do not make this mistake if the question is coming. You remember what you have to do. Okay. So, we talked about proportional control. Going through the slides then. We talked about derivative control, that here the rate of swing is being observed, and depending on the rate of swing, the rudder is brought to midship even before the ship comes to the set course. The ship continuing to swing starts slowing down swinging, and then she will settle down on a course which is parallel to the track. जो planned track था उसके parallel हो जाएगा. As the difference between the two, the set course and the present course is reducing, at some place before the ship is coming to set course, the rudder will be brought to midship. Then slowly she will come and settle down. What will happen is like this. So this is the set course. The ship was supposed to be going on this. She was off here. The rudder is operated by the autopilot system. When on this course, the rudder is brought to 0. She continues to swing and then finally settles down on a parallel course. So this is the result of the derivative control. The third one is the integral control, as we said, which is responsible for permanent rudder, which takes care of constant change of heading because of the structure of the ship, type of rudder used, the wind, current, etc., etc. How it is done? Autopilot system is observing its own behavior. There is always input coming from the set course and also the gyro course और कंपास कोर्स. वो देखता है कि बार बार एक तरफ को चली जा रही है,
So over the period of time, it makes the reading, and on the basis of that applies the rudder. Permanent rudder. That permanent rudder, as we said, becomes midship, and all calculations now will be done from that permanent rudder. Example दिया 3 डिग्री starboard का. So this was what PID system. Block diagram you have already made. So the two conditions in which the autopilot gets activated is either when you are changing the course setting, CTS change करते हैं आप by pressing the knob, turning it, locking it there, or maybe in the digital display you are setting the course to something else. 225 था, आपने वहां 22250 कर दिया, autopilot mode में ही है. Immediately it will observe कि दो difference आ गया. Current course was 225, course setting is 250. तो एक तो वो कंडीशन है. दूसरा ये कि not that you have changed the CTS, but for other reasons the ship has gone off course. वैसा difference create होता है between the two readings of the set control and the gyro. या तो हमने CTS को gyro से दूर कर दिया या gyro CTS से दूर हो गया. These are the two conditions. So when these two situations arise, autopilot gets activated and it will apply the rudder in order to bring the ship back on course. But as we already have understood and talked, made it very clear that all the operation of the autopilot system will be working within controls, within limits provided by you, the navigator. So what are those controls? We'll take a look at that. As we said, there are 10-11 controls which the user can change. ठीक है? It's basically repeat of the same thing. Just review it. See that you're understanding what you're reading. Asad, what is telemotor? Asadullah Khan. What is telemotor? Yes, sir. Telemotor क्या है? ब्लॉक डायग्राम देखो. आपको कुछ बोलता है नहीं. Sir, it gives control. It gives orders to the rudder to change. Telemotor is basically is for transmission of the autopilot signal to the steering flat. जो autopilot ने काम कहा, डिसाइड किया, उसको कोई एग्जीक्यूट करेगा तो कमांड देंगे तभी तो.
तो टेलीमोटर से कमांड जाती है स्टीयरिंग फ्लैट को। दो पार्ट होते हैं उसके, एक ट्रांसमीटर एक रिसीवर। ब्लॉक डायग्राम में दिख रहा है आपको, जो लास्ट क्लास में बनाया था आपने? आहो सर। आहो। All right. So now we are talking about the controls provided in the autopilot system. These are user controls. First of them is the course selector knob or course selector setting. आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया है। सर टैली मोटर जो अपने ब्लॉक डायग्राम में है, तो टैली मोटर में टी एक में लिखा हुआ है, एक में आर लिखा हुआ है, क्या क्या इन दोनों? T for transmitter. You did not pay attention in the classroom. There are two parts of it. The transmitter part, which is there in the bridge. The receiver part, which is there in the steering flat. एक बोलेगा तो एक सुनने के लिए भी चाहिए ना। हाँ सर। तो टेलीमोटर T is transmitter, which is in the bridge. Telemotor R is the receiver, which is in the steering flat. जब रिसीविंग हो गया टेलीमोटर स्टीयरिंग फ्लैट में, तो वो टेलीमोटर फर्दर स्टीयरिंग गियर को ऑपरेट करेगा। टू इट विल गिव इलेक्ट्रिकल कमांड, द हाइड्रोलिक मोटर्स विल ऑपरेट एंड द रडर विल मूव दिस वे और दैट वे। क्लियर? क्लियर? आहो सर। ओके, जिसने पूछा उसने बोला ही नहीं। All right. So we have the controls which is to be set by the user. The course selector knob, either it can be push, spring loaded push type selector, or it can be digital entry, what course the ship is supposed to be doing. There is then permanent helm. Permanent helm is applied by the integral control that we know, but there is also provision given by for the user that the user can set the permanent helm. So depending on what you want to do, if the course is veering off to one side again and again, तो आप permanent helm दे सकते हैं। Normally, permanent helm will depend on how much of external factors are affecting the ship. So setting should be just enough to compensate for the disturbing course. ज्यादा दे देंगे तो फिर एक तरफ को भागने लगेगा, कम देंगे तो फिर भी बाहर जाता रहेगा। The next control which is provided is the speed control. Remember our first class, we said that the rudder effectiveness becomes different at different speeds. जहाज तेज चल रही है तो रडर इफेक्टिव होगा ज्यादा, धीरे चल रही है तो कम। That means how much of rudder should be applied depends on the speed. So there is a provision given in the autopilot system to input the speed. आप जहाज की स्पीड डिफाइन कर सकते। It may be possible that the ship is or the autopilot is provided with feed from the speed log. मतलब इलेक्ट्रॉनिक डेटा आ रही है ऑटो पायलट के पास कि अभी इतना स्पीड, अभी इतना स्पीड, जैसे जैसे स्पीड चेंज होता है उसको ऑटोमेटिक इनपुट मिलता रहता है। अगर ये सिचुएशन है then you don't need to make any changes in this. You don't need to set the speed because it is directly coming from the speed log. If it is not, then there will be manual entry. All right.
Yes, sir. One thing, if it is coming from the speed log, which log are we talking about, Doppler log or EM log? EM log, sir. Come again? EM log. Very good, you are right. Please explain why. सर क्योंकि उसमें जो करंट वगैरह का इफेक्ट है उसका भी पता लगता रहेगा, तो शिप का जो टर्निंग एंगल होगा उससे फर्क पड़ेगा ना कि कितना पानी शिप के बगल से जा रहा है. हाँ, टर्निंग एंगल नहीं, it depends because of the speed of the water, the thrust on the rudder is created. If we see why the vessel is turning, if the ship is like this and the water is going opposite, that is what the speed through water is. The arrow, green arrow is the water. When we apply the rudder here, this water hits the rudder and in turn pushes the rudder to this side. I mean, sorry, the stern to this side. The vessel will turn to starboard side. So it is that speed at which the rudder is being attacked by the water that makes the vessel turn. ये अगर धीरे होगा तो कम टर्न करेगा, तेज होगा तो ज्यादा टर्न करेगा. That is why the effectiveness of the rudder changes when the speed is different. So different speeds, different turning ability of the ship. Next one is rudder control. What is the rudder control meaning? If the ship is going on this course, let us say 0, 0, 0, और 2 डिग्री पोर्ट की तरफ हो जाता है मान लीजिए, तो रडर अप्लाई करना होगा उसको स्टारबोर्ड में आने के लिए. हाउ मच ऑफ रडर? थोड़े से डिफरेंस के लिए जैसे ही ऑफ कोर्स जा रहा है तो हाउ मच ऑफ रडर? वी वोंट पुट हार्ड रडर. तो थोड़े थोड़े कंट्रोल के लिए वी कैन सेट दैट 5 डिग्री से ज्यादा मत दो. When the ship is deviating from the set course by small amount, then how much of rudder to be applied for correcting it? That is called rudder control. अगर हमने रडर कंट्रोल को डाल दिया 1 डिग्री और जहाज इधर को जा रही है, पोर्ट में 2 डिग्री गई है, तो 1 डिग्री से वो कंट्रोल होगा? नहीं सर. नहीं होगा. नो सर. मतलब अगर 10 डिग्री दे दे तो ज्यादा हो जाएगा सर. ज्यादा हो. वेरी गुड, दिस इज व्हाट द पॉइंट आई वांटेड टू ड्राइव. कम देंगे तो अपने कोर्स पे वापस ही नहीं आ पाएगा या ज्यादा टाइम लगेगा. अगर ज्यादा दे देंगे तो स्विंग करके काउंटर में निकल जाएगा, दूसरी तरफ ओवरशूट कर जाएगा, करेक्शन ओवर करेक्शन हो जाएगी. दैट मीन्स इट हैज टू बी ऑप्टिमम, बीच की वैल्यू जहां पे सही सही चले. सो ऑप्टिमम सेटिंग होनी चाहिए रडर कंट्रोल की. अगर हायर सेटिंग दे देंगे तो लार्जर रडर यूज होगा और इट विल रिजल्ट इन ओवर करेक्शन, जरूरत से ज्यादा वापस आ जाएगी. अगर कम करेंगे तो वापस ही नहीं आ पाएगा या बहुत लंबा टाइम लेगा वापस आने में, तब तक थोड़ा दूर निकल जाएगा, क्रॉस ट्रैक एरर ज्यादा हो जाएगी. सो द सेटिंग हैज टू बी ऑप्टिमम. ऑप्टिमम मतलब बेस्ट, इसमें ज्यादा नहीं और कम नहीं होता, बेस्ट होता है. कभी कम वैल्यू विल बी बेस्ट
sometimes more value will be best. That means loaded condition में थोड़ा ज्यादा, slow speed पे थोड़ा ज्यादा, light vessel में थोड़ा कम, slow speed, sorry, high speed थोड़ा कम. So that is rudder control. Counter rudder. There is also this setting counter rudder. When the counter rudder is to be applied for correction or stabilizing the ship on the set course, we can set the value. बात भी किया था अभी थोड़ी देर पहले. We can set the value how much of counter rudder can be given. फिर से the same point comes, it has to be set in an optimum way. ज्यादा काउंटर कर देंगे, दे देंगे तो जहाज कोर्स पे आने से पहले ही रुक जाएगा. ज्यादा काउंटर दे दिया आपने. अगर कम देंगे तो ओवरशूट कर जाएगा. Again, it has to be set in an optimum way. तो अभी तक कितने कंट्रोल्स हो गए? How many controls we talked about? Four, sir. For only course selection, rudder control, permanent helm, counter rudder. Okay. पांच हो गए सर. 5 हो गए. Next is yaw control. This is an important thing to understand. When the ship is going on a set course, चली जा रही है, and the weather is bad, what we see that the ship is always swinging from this side to this side. Bad weather में waves आ रही हैं तो एक बार इधर को जाता है starboard को, एक बार झूलता रहता है जहाज. Heading is constantly changing. That constant change of the heading is called yaw. We know rolling, we know pitching, we know yaw. Yaw is constant change of the heading. So हमने setting तो कर रखी है. मान लो north जा रहे हैं, 000 जा रहे हैं, but because of bad weather it is swinging to starboard port. Tell me your understanding. Shall we keep on operating the rudder एक बार port starboard करके, ताकि जहाज जितना हो सके tightly उसको सीधा रख सकें? Should we operate the rudder constantly in order to avoid any swinging of the ship so that the ship remains straight on course? Should we or should we not? नहीं No, सर. sir. No, sir. No. Please explain. You are right. Explain. सर स्पीड पर इफेक्ट पड़ता है. Great. Very good answer. If we keep on operating the rudder again and again, heading तो control में नहीं आएगा, क्योंकि sea is almighty there. तो झूलना तो इसका चालू रहेगा फिर भी. याw तो होती रहेगी, but ज्यादा एक्सेसिव कंट्रोल दे करके रडर चला करके हम स्पीड कट कर लेंगे. Rather than giving benefit to us, it will start giving us loss. हमारी स्पीड, ओवरऑल स्पीड, डिस्टेंस मेड गुड, will become less. So this yaw control allows us to stop the rudder from action, but within a limit. If the weather is bad, we allow, let us say, 10 degrees port and starboard.
तो हमने 10 डिग्री का यॉ कंट्रोल दे दिया। अब जब जहाज 10 डिग्री इधर और 10 डिग्री पोर्ट एंड स्टारबोर्ड हो रही है तो रडर ऑपरेट नहीं होगा। ठीक है भाई, झूल लो, कीप मूविंग 10 डिग्रीज प्लस माइनस। Rudder is not applied within this limit of 10 degrees which you have set. But if it goes outside 10 degrees, 10 से 11 degrees होता है, then the rudder will operate. How much? कितना ऑपरेट होगा? 10 डिग्री से ज्यादा। डिपेंडिंग ऑन रडर कंट्रोल, जो आपने सेटिंग कर रखी है कि थोड़ा सा चेंज होने से कितना रडर देना है, डिपेंडिंग ऑन द रडर कंट्रोल इट विल बी ऑपरेटेड. So that is your control. This was the situation in bad weather. But when the weather is good, we don't allow 10 degrees. नहीं तो 10 degrees के भीतर होते होते वो लंबा चला जाएगा. So when the weather is good, we set it to a narrow value. Good weather, narrow. Bad weather, wider. So we have to keep on checking the weather. On the basis of that, this settings have to be changed. सर इसको रडर इकोनॉमी वाला सेटिंग्स भी कहते हैं ना? Rudder economy, yes, it is also the control which is called economy control. Why? Because we want not to control the heading, but we want maximum output, maximum efficiency, best ETA time, fuel saving, etc., etc. So this particular thing is called economy mode. The other mode which you might find against economy is confined waters mode. Confined waters means we don't have much of room. We are less concerned about the speed, but more concerned about the hazards. So we don't want the vessel to go port and starboard of the track that we have. उस केस में speed cut होती है तो होने दो, जहाज will try to keep the course very tight. रडर ऑपरेट होगा और उसको हिलने नहीं देगा, कोशिश करेगा कि हेडिंग remains fixed to what we have set. So that is either economy mode के नाम से होगा, किसी ऑटो पायलट में ओपन सी मोड में होगा, नाम होगा उसका. On the other hand, there will be opposite to economy mode or open sea mode, there will be confined waters mode. So the modes have to be understood. You should read the manual in order to understand what the autopilot is doing for you and how to set the values. We have already explained rudder limit. The maximum rudder that the autopilot can apply is set by you by this rudder limit. आपने जितना set कर दिया, in no case the autopilot can take the rudder beyond that limit. अगर 15 डिग्री सेट कर दिया आपने, तो autopilot system when applying hard rudder port or starboard, it will not go beyond 15 degrees. 20 डिग्री सेट कर दिया तो 20 से ऊपर नहीं जाएगा. So that is rudder limit. Already said that we should not allow the rudder to operate by more than 10-15 degrees in hard mode, because that is extreme condition and we should be hand steering in that situation. अगर ऑटो पायलट से मुझको पोर्ट स्टारबोर्ड 30 और 35 करना पड़ रहा है, तो that is
a situation where we are, we should be doing manual steering. Autopilot पे नहीं करना चाहिए. The next control provided is, of course, alarm. I think you are all aware of this. When the vessel is going on a set course, आपने इसकी सेटिंग कर दी है. If it is going beyond this, अगर उससे बाहर जाता है तो rudder will be operated to bring it back. It will keep on trying to bring back the vessel on 355. But after some time, if it is not able to bring the vessel to 355, it will give you an alarm called off-course alarm. That means autopilot is trying to bring the vessel to set course, but unable to do. It can be a situation where there is heavy wind, the vessel not being, or autopilot not able to bring the vessel on set course, or it can be plain case of steering failure. कि यहां से तो सब काम कर रहा है, रडर को कंट्रोल भेजते हैं हम, लेकिन रडर ऑपरेट नहीं हो रहा, स्टीयरिंग सिस्टम फेल हुआ है, स्टीयरिंग फेलियर. इन दैट केस आल्सो इट विल हैपन. सो बीच बीच में कोर्स ऑफ कोर्स अलार्म सेट करके चेक करते रहना चाहिए कि हाँ काम कर रहा है. It can be used as a great tool for finding out if the steering is failing or not. When such case arise, you have to take the steering in your own hand. Autopilot not working, maybe excessive external factors, or maybe that the rudder has failed or steering has failed. So you can set this value after how much degrees. अगर इसके भीतर नहीं आता, अभी 355 हम कर रहे थे, आपने 3 डिग्री का ऑफ कोर्स अलार्म दे दिया. If the vessel is not able to come within plus minus 3 degrees of the course setting, 355 plus minus 3 degrees, अगर इसके बीच में नहीं आ पा रहा है for certain period of time, then of course alarm will be generated. Like we said, this setting has to be adjusted as per the weather. We know that in bad weather the vessel will very often go off course and it may take time to come back. तो bad weather में थोड़ा wide रखते हैं, good weather में we keep it narrow. Next one is synchronization control. You know, पहले क्लास में भी बात किया था कि the steering that we are doing, normally कौन से कंपास से आप स्टीयरिंग करते हैं? जायरो से. जायरो से करते हैं, लेकिन आप जायरो से नहीं करते हैं, जायरो रिपीटर से करते हैं, जिसको देख के आप स्टीयरिंग कर रहे हैं, या ऑटो पायलट जिसको देख के कर रहा है वो रिपीटर है बेसिकली. मास्टर जायरो कहीं अलग होती है, ये भी हमने बात किया था. तो मास्टर जायरो से रिपीटर्स में इनपुट जाते हैं. मास्टर जायरो इज रीडिंग 355. All the repeaters should also read 355. Meaning what? All the repeaters must be synchronized with the master gyro. It is then required that there has to be a control provided for matching them together. जैसे घड़ी सेटिंग करने के लिए हमारे पास फीचर होता है, वैसे ही
the repeater should be synchronized with the master gyro. आप प्री डिपार्चर चेकलिस्ट आप लोगों ने किया हुआ है? Have you? Yes, sir. उसमें पॉइंट आता है ना कि ऑल रिपीटर्स सिंक्रोनाइज्ड. Yes, sir. So before departure, you are setting it to the set value. You are trying to match all the repeaters. एक starboard में विंग में होता है, port wing में होता है, सामने bridge front होता है, steering का the repeater है. All this have to be synchronized. A button is provided for that. I think you all have operated this. If not other controls, at least synchronization वाला operate किया हुआ है आप लोगों ने. Another control that you have operated is the selection switch for steering. You may have auto steering, you may have follow up, you may have non follow up, NFU, follow up or auto mode. ऑटो मोड मतलब ऑटो पायलट काम करना शुरू कर गया. फॉलो अप मतलब हैंड स्टीयरिंग काम कर रहा है. हैंड स्टीयरिंग में क्या होता है? आप व्हील जहां लेके जाते हैं रडर पीछे पीछे आ जाता है. आपने स्टीयरिंग किया स्टारबोर्ड 15, रडर पीछे पीछे स्टारबोर्ड 15 आ जाएगा. आपने किया मिडशिप, रडर पीछे पीछे मिडशिप आ जाएगा. आपने किया पोर्ट 10, रडर पीछे पोर्ट 10 पे आपके पीछे पीछे चलता रहता है, फॉलो करता है आपको. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फॉलो अप. So very often it may be written as hand steering or manual steering. ऑटो पायलट के बारे में हम बात कर चुके हैं, ऑटो मोड में हम काम कर चुके हैं. नेक्स्ट वन इज NFU. All are aware what is NFU control? Yes. Yes, sir. क्या होता है इसमें? प्लीज एक्सप्लेन. सर नोब से अगर करते हैं. स्टीयरिंग पोर्ट में गो अहेड. गो अहेड. सर अगर NFU से स्टारबोर्ड 10 दिया मतलब स्टारबोर्ड की तरफ पुश करके रखेंगे और अगर स्टारबोर्ड 10 चला गया एंड जब सर जैसे ही NFU को रिलीज करेंगे तो स्टिल वो स्टारबोर्ड 10 पे ही रहेगा. वो फॉलो अप की तरह वापस मिडशिप नहीं आएगा. अगर उसको वापस मिडशिप लाना है तो सर अपोजिट डायरेक्शन में NFU को मूव करेंगे मिडशिप लाने के लिए. वेरी गुड. सो यू आर ऑल अवेयर, यू हैव ऑपरेटेड इट आल्सो. बहुत बार आप लोगों ने स्टीयरिंग फेलियर का ये किया होगा, ड्रिल्स किया होगा, उसमें भी ये करते हैं. सो NFU इज बेसिकली bypassing so much of control system. When we are using NFU, we are directly sending a control to the steering flat. यहां से टिलर से हम डायरेक्टली ऑपरेट करते हैं रडर को. बीच के सारे चीजें जो ब्रिज से वो टेलीमोटर ये सब जो सिस्टम था उन सबको बाईपास करके डायरेक्टली चले जाते हैं कहां पे? हाइड्रोलिक मोटर को हम ऑपरेट करते हैं. So that is NFU. Next one is dimmer. Light, how much of illumination you want depending on the light conditions. दिन में है तो जरूरत नहीं है, ऑफ भी कर सकते हैं. शाम है तो थोड़ा बढ़ा सकते हैं, रात है तो और कम कर सकते हैं जितने में दिख जाए. सो सारे पैनल्स हर तरीके का जितना इक्विपमेंट है सब में ये ब्रिलियंस कंट्रोल होता है. रडार को कम ज्यादा ब्राइटनेस कर सकते हैं, GPS का डिस्प्ले कम ज्यादा कर सकते हैं. So on different equipment you have this feature dimmer switches provided. So these are the user controls which you are going to set in order to make the autopilot work at optimum level.
All right, so we are up with the time now. So next class we'll meet. कहाँ गया? So when we go to the next class, we'll talk a little bit about वैसे खत्म हो चुका ये autopilot system. We will talk one bit about adaptive autopilot. Just one line introduction. क्या चीज है ये adaptive autopilot? बहुत लोगों ने आप लोगों ने देखा होगा स्टीयरिंग गियर पे PID लिखा होता है, adaptive लिखा होता है. Is there a selection switch? Anyone who has seen adaptive written on the panel somewhere? सर स्टीयरिंग गियर में होता है ना सर? हाँ, उसी में होगा. वही कंट्रोल पैनल है, उसी में होगा PID एंड adaptive. अगले क्लास में बात करेंगे. Any questions? Okay. Any थैंक यू questions? सर. Thank you. Question हो गया. ठीक है, चलो. Bye bye. We meet Thank again. you, sir. Thank you, sir. Bye bye. Have a great day, all of you. Bye. Signing off. थैंक यू सर. Okay. Bye bye. Thank you.